heavy hitters. I mean, you say Nova has one of their heavy hitters. They're all one of the four. Pretty big batters. One of the four heavy one hitters. Of the four heavy hitters, that's for sure. Potato coming against Alex from IXC, gets the DP out just a little bit more to put it in there, but can't finish it off. Alex, slick with it around the back of the buggy. Playing a little bit too spiky for the alter ego home turf player. Fortunate stuff there. Just a few bullets had to zip through, maybe the window or the chassis itself, but Potato's out in the open and Alex just had to bide his time. Quick peek, nice and easy. DRS rules. Ooh. Easily done there. Vitali's out and down. That's kind of DRS gameplay though. You know, you sit in the top of a house and just wait for someone. They are quite campy as a team, honestly. But I mean, if it works, it works, right? They get to have marshmallows as well, so I can't complain. That was a cracking pre-fire on that. I really, really enjoyed that as well. He's heard those steps coming through. He's like, well, he's going to run through the door right now, so I'll just start firing before he even has the angle. Very, very well orchestrated there. I feel like in these solo scenarios, the value of nades is going to go up vastly, Blank, because you're just going to be able to completely wipe someone out instantly. Remember, there's no knocks. You can't get rezzed because you are playing solo. Yeah, it will be one of those cases of just complete unfortunate circumstance of nade comes your way, you had no idea the player knew your position in the meantime, you're done, it's out, Federal looking for some kind of cover there, but Becker from Inco to finish the job. Federal's actually areas to be played, the yellows down on that west side as well on the road. That could be a nice place to pick up, but again, these are very shareable spots here in the solos. 38 players remaining now as Rig did fall on the Sosnovka military base, the last remaining player of T2K who won out that scrap on the south. Will no longer have a member in action. They can turn their focus to the main tournament and watch the rest of this lovely show match. Action, takes shots towards Silas. Cannot quite get the job done though. Silas thinks to himself to maybe try and pick off some more players. Nova still running, I think, with 3 at this point in time, with Order being the only one to fall so far. 4 AM with 2 players up towards shooting range, and that box compound, that's MW. As well as one more. Influence Kevin, Karofsky, Little Boy took out Law earlier, so 2 players still going from Influence Kevin. Very strong couple of set of players there. Action from Stalwart. Very powerful himself. Little boy there. Domino's में है 25 plus chicken pizzas and sides. Domino's से बेहतर choice कहाँ मिलेगी? Domino's. गोवा बीबो डेली स्टील डील से बेस्ट प्राइस पाओ और यूज नहीं किया तो पछताओ। आप स्काउट और एंड क्यों सुनेगा? मैं कहाँ ही सुनूंगा, हम थोड़ी कश्मीर जाते हैं। सॉरी, कश्मीर कहाँ? मनाली। हम थोड़ी मनाली जाते हैं, कश्मीर बना दे। इंडो वाले हो भाई, तुम मनाली क्या करोगे? मावी आज तक टाइम पे नहीं आया है। मावी कहाँ है? पता नहीं भाई क्या चाह रहा है ये। बर्तन धुलवा रहे होंगे इससे। हाँ, शादी हो गई ना भाई की। हाँ भाई, मॉडर्न प्रॉब्लम्स, नई प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसे मावी किसमें? गाइस, मावी अब फैमिली मैन है, तो उसके नई बर्तन मांज रहा है वो। बर्तन मांजने पड़ते हैं, खाना वाना बनवाने हैं, कोई भरोसा नहीं है। कर देगा, साउंड कम कर दिया। लॉर्ड स्कॉट भाई, यू रियली इंस्पायर्ड मी, थैंक्स सो मच अदीउल्लाह खान भाई। ऑल बच्चों से न्यू पबजी। रिलेशन विद रेगल टॉस नहीं, मेरे कोई रिलेशन नहीं है रेगल टॉस के साथ, हमारा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। रिलेशन विद रेगल टॉस मियां बीवी है लोग, कल ही शादी हुआ था। रेगा लोटोस लिख रखा है ना। अबे पता है तो हम लोग क्या सुन रहे थे गाइस? मैं दोनों स्ट्रीम की आवाज साथ में चला रखा था। एफ मैं सोच रहा हूँ यहाँ तो बंदूक नहीं चल रही है, आवाज कहाँ से आ रही है बंदूक की? मैं भी कंफ्यूज हो गया, इतना हाई साउंड क्यों आ रहा है बे? साउंड डिले नहीं था, 2 स्ट्रीम चल रही थी एक साथ। डबल हाँ ना, वही देखा। आना चाहता है। अच्छा, नियो को हम का 8 बिट वाले में ना, नियो को बोलो 8 बिट वाला दर्द कभी कहीं नॉर्मल ज्वाइन कर ले। पैरावे और स्क्राई का फाइट चल रहा है अभी। क्या लगता है
So parabolic नोवा grind, इस बार भी still quite far वर्ल्ड outside the चैंपियन circle, बनेगी और easy अपने आप को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम towards बनाएगी. the north side of Rozok, so a long way for this guy to go. Good चलो shot. guys, ओमेगा अगर इस बार नोवा जीत जाती है तो हाँ। अनडाउटेबली नोवा विल बी द बेस्ट टीम एवर, जो अभी भी है. तो है ही भाई. बट उस अभी मतलब स्टैम्प लग जाएगा. मतलब नोवा को डिफीट करने के लिए नोवा कितना जीता लगातार अभी? 5 नहीं 4 या 6 चाइना वाइना सब मिला के. गैस ये बताओ नोवा ने अभी तक कितना जीता है चाइना वाइना सब मिला के, वर्ल्ड चैंपियन और चाइना का लीग पूरा मिला के? Unless you can isolate one of those angles like Jimmy's managed to find over towards one of the 4 AM players. WWX laid broad, actually steps in front of the tree. Title में PMG से लिख I think he spotted Jimmy there. कोई नहीं ऐसे लिख रहे हम. Sees up the hill. देख लिया मैं इंट्रो. Not going to be able to 7 लिख रहे लोग, 6 लिख रहे हैं. पता नहीं भाई, मेरे में 2 7 4 लिख रहे हैं. अबे एग्जैक्टली बताओ बे. पतला क्यों हो गया ये? मेरे कोई ये कैसा सवाल है? 6 पकड़ो, 6 ना 6 जीती है. 7 जीती है अभी तक. अबे लोग क्या बकचोदी करते हुए. शायद 5 4 क्या beautiful सारे over the top अनपढ़ of the हैं, hill. chat में, Micah कुछ नहीं पता है. stays alive with it. The UMP manages to find the shots it was looking for, managed to land center of mass there. A low HP bar there, but it's healed it up very, very quickly, and a resupply on the crate. Really good stuff Solo there कब from देखेंगे? Micah. Very, very far to the team. बात करेंगे हम Found a बाद new में उसके addition बारे for में. them. It's kind of that अभी गैस इसके बारे में बात करते हैं ना जिसकी हम वॉच पार्टी कर रहे हैं. team alongside with him and Yuhai. Made अरे something very आकाश भाई special थैंक यू out फॉर द of 40 मेरे भाई. from Malaysia. Looking to go a little bit further here in the PMGC. पैरावे को पैन करो भाई. So this is just a भाई, short match though. $3,000. एवरी टंग एंड एवरी हेड मस्ट बाउ टू हिम. आ गया नियो ड्रैग करो. वेट Nice hefty No, chop. he is the greatest of all Your time. way. That's something I hadn't really thought about. नहीं दिख Picked रहा. up there, I बिट के believe, was डिस्कॉर्ड में a नहीं car आया. नियो. 98 जैसे from Micah. माइक टाइसन ने बोला था मोहम्मद Very, अली के very लिए, वैसे powerful are ही these snipers. हर एक ई स्पोर्ट्स One एथलीट shot बीजीएमआई down का and you're out. It's ये not एक्सेप्ट even करेगा just headshots that फॉर are gonna, पैराबॉय. get a knock, take some supplies away from the enemy team. That's just the full elimination. रेस्पेक्ट right there, one and रेस्पेक्ट. done. क्या? Yeah, so you best have some of those level 3 helmets still on board because, yeah, there's no knocks. There's no knocks. It's just bish bosh out the lobby. No longer have a chance in hell at picking न्यू up स्टेट that की वॉच पार्टी नहीं $3,000. सिर्फ पीएमजीसी की वॉच Looking down पार्टी. towards Good Xiao. Jimmy. Alongside one another now. So Hmm. Good Xiao maybe in a more of a position to take this 1v1 with Jimmy. जिमी और इसका Oh, भाई. MP, Silas. किसी और को तो नहीं बुला रहे ना. From Vampire Esports, Stoned. Player that I want to see do pretty अभी well को during लेके the आएगा solos. क्या? क्या हुआ? You did say that. पूछ रहा है किसी और को तो नहीं बुला रहे ना, Maybe, तो मैं but पूछ we're रहा हूँ talking भाभी को about लेके आ overall रहा है the analyst desk is क्या? coming through. I feel like we're seeing more of the IGLs start to step up in this scenario. I mean, we still got players like Paraboy coming on through, but Jimmy in a phenomenal position on the north side of this. And जिमी तो भाई so पूरा much control over the प्यारा south जगह side. लेके बैठा है. Yeah, Jimmy's totally good to go. भाई मैं सोच रहा हूँ अगर He's a strong एंड player. में 9 वर्सेस 9 हो गया A lot of ये areas शो control में तो themselves मजा आ जाएगा. towards that northeastern side, can cough a lot of rotations as they come down. It's going to be difficult Passport for Xiao to actually even try and बस करो भाई, एक ही बात कितना स्पैम करोगे चैट में without सालों. alerting the presence towards Action, Delta, My Name P, Ravenclaw. So Jimmy's in a really जल्दी good मैच spot शुरू at the करवा moment. भाई, क्या लड़ क्यों नहीं On रहे that हैं? inside जीजो of the फिलिप circle, and it's नेक्स्ट gonna make life जीसी a में lot सोल harder चाहिए. later इट्स माय on. चलो ए प्रेयर्स. बिल्कुल भाई, सीरियस जरूर भाई, जरूर. सीरियस बातें अपन करेंगे. एक बार मैचेस चलेंगे हम लोग प्रॉपर अरे संसार भाई टेंशन फोकस करेंगे इस चीजों पे. हम कर लेंगे वो. ये फ्रेंडली मैच है. हाँ ये शो मैच है. सोलो मैच चल रहा है. ये सोलो मैचेस चलेगा सभी. मावी का इंट्रो देखो क्या हो गया. झाड़ू पोछे की वीडियो लेके आ गया वो. ये पोल डालते हैं. एसटीएल वीडियो में कब आओगे? देखते हैं भाई. It's me. It's all starting to pop off just a little bit now. 16 players left remaining. Schweppes moves up. Alter Ego still अरे, has अरे, a अरे. player in this one. ये तो गया. Fnatic moved all the way down from क्या लगता है गाइस आज लीडरबोर्ड टॉप कौन करेगा? नोवा या एसटी? Get up towards the side. Schweppes down. जब पहला मैच शुरू होगा तब देखेंगे किसका चिकन किसका. कैसे हो भैया? लव यू ब्रदर, लव यू टेक सर्च. क्या हालचाल? Fnatic knows that there's players in the mix. Just had to send the vehicle in. मास्टर की आवाज ज्यादा आ रही है क्या? रुको कम कर दे. वही कर रहा हूँ. इसमें तो क्या बोलते हैं ये है क्या बोलते हैं
जिमी जिमी का बहुत अच्छा पोजी है, प्रॉपर एज में, उसके पीछे कोई नहीं है। 15 बचे हैं भाई अभी तो। चलो चलो चलो, ये क्या कर रहा है? जोन 1 जा भाई। भाई सोलो है। घूमे जा रहे हैं। तू अभी वही चल रहा है 0-20 19 18? क्या टाइम? हाँ हाँ 10 9 हाँ, 8 तुम से 2 सेकंड आगे, थोड़ा मैं आगे कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं guys। हाँ जा जा, नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट, टिल डेट ही इज द बेस्ट बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी, इंसेन पाकिस्तान उर्दू कंसिस्टेंसी, लगाओ क्या नो भाई? डाउट। इंग्लिश में सुन लो भाई थोड़ा सा। पर ऐसे वर्ल्ड का इंस्पायरेबल है, पूरा वर्ल्ड का इंस्पायरेबल रूम है। किसका है? ज़ेरेफ का। ज़ेरेफ का। अगर कोई उसको डिनाई करता है देन ही डज नॉट नो द गेम, एंड जो डिसरेस्पेक्ट करता है दे शुड नॉट बी रेस्पेक्टेड। That's what I feel. Catch a little bit further north on this as well, and a lot of open ground for these players. Will be difficult. 14 remain. नोवा स्पोर्ट्स ने निशट का लाइनअप मेरे उठा लिया। पैशन चेक कर रहा था। क्या बात जॉर्ड है? लव यू नाइस टू सी यू डूइंग वॉच पार्टी। अरे ज्ञान संसार भाई, तुम तो बड़े ही दल बदलू आदमी। अभी तक गाली दे रहे थे मेरे को भाई। बड़ा हरामी आदमी है यार तो। क्या हो गया? कुछ नहीं, अभी बोल रहा था कि गोबर आदमी तेरे पास की नहीं है, वॉच पार्टी बंद कर दे। अभी आके बोल रहा है मैं तेरा पैशन चेक कर रहा था। ये कौन सा तरीका है चेक करने का? अरे अरे हेलो बेचारा, गाइस। बहुत जल्दी आया तू। अरे मैं आज थोड़ा सा वो अपने काम मुंह था, घुमा रहा था काम उधर। था। तो इंट्रो करना एक चीज होता है भैया, तुम आए हो कतई 20 मिनट लेट। अरे वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया। और पता है शादी ब्याह लड़के हो गए हो तुम, समझ आ रहा है? झाड़ू पोछा लगा रहे थे क्या? हाँ चैट में थोड़ा कह बहुत रहे समझ गया, देखो समझने वाला समझ जाता है। पसीने। अब तो मावी अगर भसड़ करेगा तो भैया झाड़ू चप्पल जूते सब आने वाले हैं। अरे 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 ये स्काउट इधर टारगेट क्यों कर रहा है? मावी टारगेट टारगेट कर रहा टारगेट नहीं कर है। रहा। क्या बोल रहे हैं? आज गाइस अगर आपको मतलब मेरे को डांट पड़ेगी। क्या कुछ नहीं हुआ उस टाइम। मतलब मैं अबे स्ट्रीम वो पे तो ठीक पता है, है। सुन सुन ओमेगा, मैं स्ट्रीम पे बोल रहा हूँ गाइस। देखो मुझे पता नहीं है, मैं बिलीव नहीं कर रहा, क्या पता दोस्त की शादी हो, मावी की अपने मुंह से बता देगा स्ट्रीम पे आके, और मैं देख रहा हूँ वीडियो पे वीडियो आ रहे वाला, मैं किस मुंह से डिफेंड करूँ मैं, और किस मुंह से झूठ बोलूँ? अरे मेरे को तो एक चीज समझ नहीं आ रही, लाइक शादी का काम है भाई, हजारों लोग आते हैं यार। स्काउट से खबर हो ही नहीं रहा कि मैं क्या बोलूं। हाँ मैं कवर अप क्या करूँ अब? मैं देख रहा हूँ एक बंदा लिंक स्पैम कर हाइड मार देता हूँ, ठीक है भाई 10 लोग 10 चीजें बोल रहे हैं अलग अलग, मैं हर चीज का क्या आंसर दूं? क्या सोलो कौन जीतेगा? मेरे को लगता है, हाँ मेरे को लगता घर है वाले जिमी। जीतेंगे। घर वाले जीतेंगे अगर घर वाले जीतेंगे, उधर ही जाना है। पर एक ही घर पे 2 लोग क्या कर रहे हैं? कैंप। अबे एक ही घर पे 2 लोग हैं, देखो पता है? मेटा हो गया ना ऐसा। भूल गया तुम लोग। अब थोड़ी है, या लौड़ेगा बेटा, व्हाट इज दिस मैन? अभी तो शॉटगन यूज नहीं अभी तो करते, शॉटगन चलेगा करते ना, हैं बहुत गलत। अभी तो बहुत चलेगा शॉटगन। एक्शन नहीं मान रहा भाई। चैट वाले मेरे को लड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं देखो भाभी क्या बोलता है। बाकी माँ भी एक बात बता, तूने मतलब कैसे बोलिए। सोच लिया कि वो चीज नहीं होगी? मतलब शादी का काम है, इतने सारे लोग। नहीं 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 नहीं, पता है ऐसा लीक होने का दिक्कत नहीं था। लोग ना अपने आप बातें बनाने लग जाते हैं। मैं वो लाइव तो आ है नहीं ही। पाता, मैं लाइव आ नहीं पाता, देख लोगों ने बातें बनाई ना। पर वो तो था ही, वो पर तो पता मुझे है, उसका तो मुझे ये बता, बना हुआ। तो हमें क्यों फंसाया तू? तो तूने हमें वो तो क्यों फंसाया ये discussion हुआ ही था बता, भाई। ये हमें क्यों फंसाया गया ये बताओ मेरे को। जो तुमने इतना प्यार से ग्रुप में लिखा था, प्लीज काइंडली डोंट टॉक अबाउट माय पर्सनल मैटर ऑन स्ट्रीम, गाइस अंडरस्टैंड द प्राइवेसी। अगले दिन देख रहा प्राइवेसी मेरे एल पे फोटो लीक है। मैं बोल रहा, मैं एक दिन पहले डिफेंड किया, अरे कुछ नहीं गाइस, स्काउट मावी चिल कर रहा है, जब भी होगी शादी बता देगा खुद से। अगले दिन मैं क्या किस मुंह से और क्या बोलूं भाई स्ट्रीम पे? अरे यार पता क्या है, मैंने बोल के तो सबको रखा था, बट तेरे को पता है कुछ ना कुछ शरारती होते हैं भी। भाई तू सोच ना, एक वेटर अपलोड करता है फोटो। अरे तो सब हो सकता है भाई।
जिमी सारंग का तो बोल नहीं रहा होने वाला यार, है, इतने सारंग बोल रहा है सारे थ्रोबैक मिल रहा है। अरे मेरा वो नहीं है क्या क्या? एक सेकंड होगा सर, एक सेकंड। एक घर बचा है जिमी को आने के लिए और मेरे को लगता नहीं मिली जिमी ने को आने बताया देगा। था, मिली तो नेक्स्ट लेवल, मिली ने तो नेक्स्ट लेवल लगा था भाई वो तो पूछो ही मत। और मैं उससे ना, जस्ट थोड़ी देर मतलब, पहले हाँ पता है, मैं तुझे थोड़ी देर पहले कुछ बताया और थोड़ी देर बाद में बोला कि guys, हाँ यही घर था जिमी के पास और अपन इसी क्या में करेंगे भरने मर कि अपन ऐसे जाएगा। सरप्राइज रखेंगे। अरे बेचारा जिमी मर गया बे। मेरे को पता ही था ये मिली तो ने आके पूरा गाइस ये हो गया है। क्या बोल रहा है? फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया भाई गाइस जो नया फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो भाई। ये देखो यहीं पे वॉच पार्टी का मजा लेने से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और रेगुलर तो होना नहीं है, जाना है मनाली घूमने भाई को। रेगुलर मैं रेगुलर नहीं हूँ भाई, मेरा मनाली YouTube खोल, स्पीति मेरा वाली, ये लोगो अलग है, खोल। ये बड़े हैं, ये स्पीति वाली जाते हैं। लोग को पैसा। उफ भाई पैसों की तो बात करो ही मत भाई, रहने दो। उफ। किन लोगों के बीच में भाई, पैसों की बात कर रहे हैं भाई हम लोग यार। उड़ रहा है पैसा ऊपर से नीचे। हाँ बस हम कैच नहीं कर पा रहे, बस वो आ नहीं पा रहा हमारे जेब तक। हाथ तो फैलाओ, हाथ फैलाओगे सब आएगा। अबे हाथ बोलो फैलाने एक- की एक- तो आदत नहीं है, एक बंदा हाथ ही तो नहीं फैलते। एक बंदा तो क्या लिखा, मावी ने तुझे और तूने हमें चूतिया बनाया मिलके। और अब ठीक है भाई, वाह, यही और एने बंदूक मेरे कंधे में लग गई। मावी ने तेरे को शादी में नहीं बुलाया, तू जलता है मुझे, मतलब अरे मैं लेकिन- जल रहा हूँ मावी से, अरे- मावी की शादी होगी। पता है, हाँ अरे कमेंट्स पढ़ के ना हंसी आती है। जरूर जरूर सारंग लिख, नियो को ले लो। अरे सारंग कहाँ का है नाम नहीं नियो? बदला अभी तक। सारंग एक काम कर, गाइस सुनो, मेरे डीसी पे आओ ना, मेरा डिस्कॉर्ड नहीं है क्या? जेरेफ किसमें होगा मेरा अरे Discord? जेरेफ वाला है, मैं हाँ, नहीं है इसमें। तो सुन ढूंढा मैंने। वहाँ पे ढूंढ, क्या हुआ? स्काउट ओपी ग्रीन कलर का लोगो रहेगा। हाँ मिल गया। हाँ जा क्लिक करके कहीं बैठ जा वेटिंग रूम में, ड्रैग करता हूँ। मैं भी आ जा मेरे डिस्कॉर्ड पे फटाफट। क्या वो किसी और को बुला रहा है? अरे तू आना मेरे डीसी पे। अरे ये किसी और को बुलाया, मैं बता रहा हूँ। अबे यार। एक लड़की को बुला रहा हूँ ओमेगा के ऐसे लिए। किसके लिए? नहीं मेरे को मतलब मेरे लिए कुछ भी मत। How many names does my name P still have? And how useful is it trying to thread this through? हेलो, अबे क्या इंटरनेट है भाई, क्या इरिटेटिंग माइंडफक है आजा भाई। ना, अभी आजा ना। अरे रुको बे इंटरनेट वाले को मैं बात करके आया, रुको। Said DRS a little bit campy, but now they've gone full on feral. They've gone right into the wilderness, taking it to the enemy team, just hiding in the old bushes, in the trees, taking the shots where they can, laying those traps. And Kowski, कैसे भाई, आपको जुकाम लग रहा है? it's right into हाँ भाई बहुत तगड़ा जुकाम है भाई। देखो मैं कितना ख्याल रखता हूँ आपका। कास्टिंग वाला हम लोग, कास्टिंग वाला इतनी बसड़ होगी ना, कास्टिंग से ज्यादा हम लोग कास्टिंग कर देते हैं। मैं ओमेगा और स्काउट कास्टिंग कर देते हैं। स्काउट असॉल्टर की कास्टिंग कर देगा, मैं और ओमेगा कर देंगे। मैं थोड़ा ओल्ड टाइप कर दूंगा, थोड़ा सीनियर टाइप, फिर वो कर लेते हैं, देख लेते हैं, एक टीम पकड़ लेते हैं, उसके आईजीएल बन जाते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से क्या करवा रहा है। चल ठीक है, मेरे को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, लुक ओवर करना पड़ेगा। मेरे को ये बताओ कि ये दो लोग कैसे खेल रहे हैं? एक जिमी भी खेल रहा था, किक भी खेल रहा था, सारी टीम के सारे बंदे खेल रहे हैं। अबे सारी टीम के सारे बंदे खेल रहे हैं, शो मैच है। do wonder how well these two
Two players know So one another. less. Yeah, probably not well as Omega? catch. What color is your Bugatti? Oh, it's going. मेरे पास तो भाई 1-1 कुछ here. नहीं है भाई, गरीब So it's आदमी। like, let me tell you something. It's me. It's me. बुगाटी your brother. भाई। फ्लैंक ही कौन करेगा फिर? फ्लैंक की Off. So long successfully. गया Vampire with the main गया। Disappointed with the thumbnail. Seriously. Extremely disappointed with the thumbnail. आ जा तो हम लोग सब तक देखते हैं। ओमेगा ने बोल दिया नहीं बोला। नहीं तो ओमेगा नहीं बोला। अच्छा बहन जो मेरे ऊपर अल्ट्रॉन है। देख रही इसकी तो आदत है अल्ट्रॉन किसी और के कंधे पे। trying to stick it out. Stoned seems to have the bead on My Name P. Hits the deck for the drop shot, but the nade doesn't land either. And in comes the push as well. Ankle sweeper, maybe. Has to swap the weapons. Yeah, Hang on a minute. What is going on? Stoned just doesn't spot him, I suppose, through the smoke. It's difficult to see. A sliver of HP keeps him alive, but the DPS around the corner gives him a shout in the fight. But no, My Name P finally up and into the action. Will take down one of the Vampire players. Now it's 1 versus 1 versus 1. Ravenclaw the last for Vampire. It looked like the shimmy DBS was not working out that time, just from side to side. Looked like he was trying to go for the do-si-do, but that does not bring the dough home in that 3K. Fireflux looking to take it all the way here with Solus, looking mighty strong in a decent position on the edge, but this is the final zone. It will continue to move in. Ravenclaw, oh, he's left this medkit to the last moment. The surprises as he runs out, looks towards My Name P, looking for that revenge. Nade from Ravenclaw being pulled now. No utility left at all for My Name P. No backpack either. Gonna go bear into this one. Solus spots Ravenclaw crawling up, sees him hit the deck, and there's no way Ravenclaw gets away from this one. Center of the circle needs to be occupied now. And with their chance here, Solus as well, up the top rope. Right on the edge of the blue zone, and My Name P is just moving in with this circle. Knows exactly where the player's going to be coming from. Very, very central now. Nades for Solar. Arm is 1v1. Up he goes, Solar. And it's Fireflux. Mate. That's see, we heard what Solke said, you don't mess with fire even if you're on the and Fireflux will take home. The first show match there was taken. Hey, happy days for them, but honestly, so we expected to see towards top. It was kind of weird for me. I thought that, this should be all topsy-turvy, but no, we did see guys on the desk who talked about they already went down almost instantaneously, but that's how these things happen. True as well. I mean, to get a little bit later in, failed. Preparing for the games to come. Maybe, but if you put it around, you're My Name P. You try to take it all. They came here to play, man. They came here to play. Take the shot, see if they can get it done. Yeah, hopefully they can. Everyone's very in Jakarta. Thinking, who's going to have that power? I feel like scenario to what we're going to be seeing for the rest of the day. It's a really good little amuse-bouche, as Matt would say.
the rest of the day. Up You right would now, say yeah, that. That is in okay. fact the word. Not any A mouth. context. It A just- it's like Okay, an thanks, hors d'oeuvre. So It's like an hors d'oeuvre. Kind of little. It's an hors d'oeuvre. Plain French words. Good. You are. That's very helpful. Take a look at that flag flying across the top of the crowd there. Pride, though, coming on through. Lovely to see. I mean, I thought people tried first, but then I realised that they're carrying it across. I thought they were just like capturing people. But no, that is happy days. Good stuff. Honestly, when the army came in for I mean, they picked the moment, but like, oh, one's in. Oh, we still have the big amounts to bring. There's plenty of support, not only for the Indians, a lot of the other teams as well, but it is their home turf, and you've got to love it. You've got to love that show of pride. As they gather the flag up, they dragged it all the way across. So maybe in a bit. Are they going? Like a tournament cold, actually. Yeah, it is. Yeah. It is a bit chilly. We're up in an air-conditioned area. Yeah, I mean, you know, goosebumps. I get the goosebumps because I'm cold. Maybe that's. He wasn't nervous, but we're gonna head to an stage. Sensational. We are joined on the main stage. All this at 5 bucks. Congratulations for taking home the show match. I have to ask you, in regards to the day, has that boosted your confidence? Tebrik ediyorum gösterdiğinden. Bu maç senin performansını ve özgüvenini yükseltti mi? Ne düşünüyorsun? Asıl maçlardan önce de performansım dedi. Sonraki maçlara bulunacağım. Of course, this match my confidence, and I hope that it will also help me to show better performance during the. Oh, teman-teman semuanya, list dari yang sudah solo barusan menyampaikan kalau memang ini membuat sendiri dari Soles ini meningkat dan bisa performa baik, dan pastinya Soles sendiri senang akan hal tersebut. Soles, sana sormak istediğim öyle bir soru var, merak ettiğim bir konu var. Hangi kendin için büyük bir olarak görüyorsun show maçları da Öncelikle birinci takım oyuncum, ikinci tehditte Order. Our team player, Cage, he is the biggest. Oh, oke. Jadi Order. Tim match-nya sendiri yang sebenarnya satu, well, Match of the grand finals. Okay, I just want to let us at home. What is your team's biggest strength going into today? maçlara başlamak istediğim bir durum var. Sürekli birlik içinde olmamız, hem oyun dışı olsun, sürekli birlik içinde olmamız ve farkımızın olmaması. Advantages and we're always together and always support each other. Oh. FF ini atau Fireflux ini sendiri ada kekeluargaan mereka, karena mereka suka lah ya kayak kita para Indonesia banget gitu. Post-match interview, and best of luck in the rest of the day to you and to your team. Thank you. Thank you very much. Energy back was a great. Thanks. It really was. Donna, you know what? That
level that we are all going to expect now for the rest of the tournament. Now, ladies and gentlemen, to the main stage, Indonesia Esports Federation, Dr. SEMMMA. To, well, thanks to Donna Vizquel for that beautiful interview. And if that isn't a storyline that we almost kind of... He took down... And that almost... I think we probably are celebrating. But I did like what John and Black was saying during that game. Like, it's me! It's me you're shooting out right now. After the game ban. Two guys for these and it's not saying all these French words. There's only one French word I know and I cannot say it. I do want to touch on something. Two Vampire players in the top 4 and out almost immediately afterwards, which is quite the bummer, I can imagine. Yeah. With that, let me take on that real quick. You pointed it out too. When there was a 4, there was one player that just wasn't moving. He was just waiting, pitching. That was say it too. He decided until the last minute to just get that last heal. I wish he would have rotated a little early, but at the end of the day, it is a show match. And I just not taking the win in that game. It was close. Yes. He had what combinations constantly like moving about. He were a player that was on and he actually made it work. That was actually in Jimmy. Actually, he was saying in the interview, it was goalless to say, you know, like is like level. Yeah, it's good little was 1v1. A little bit. Show match. It is okay. Only there, and he reacted this. Maybe, but it we're already in on chances. Say this. Top 5? How? But I think top 5 not. But I'm just. Pretty big. So no. Yeah. At least the thing is, I need to be in that. Mine, don't factor mine. It's purely. Then again, I have sympathy. Into it. Don't tell little pigs. I'm talking about me. Just in great situations and not being in his favor, he ended up sitting, and that's something that he's not used to doing by himself. But if we're going back to what you were saying earlier, if anybody taking it serious, you could tell that Jimmy was like, I really want to win this. I mean, you said it right. IGL's good, no? Yeah. Try and get himself in good positions. And I was impressed that IGL's made it that far. So you know what? It was. You were good on that call. And also the circle was important. If it would have had at least a little bit of cover, just a little bit of cover, I think he would have ended up top 3. Yeah, that's the unfortunate position. But the circle, we know, doesn't happen very often. If we have that circle happen again during this tournament, you'll be like, oh, wait, this happened. Maybe we can make things work a little bit. But yeah, good start. And man, the hype is just insane. I just can't wait. It's I crazy. love the game. It's...
I mean, absolutely. I still have goosebumps. Like, literally, look at this. No, what did you say? Goosebumps. You had what? Goosebumps? I think you had Goosebumps. Did I actually say goosebumps? Oh my goodness. I wonder if they gave that, No, that big flag over to Blank. He was cold. I think you need to give it to him. Was he? Did they give it to him? Oh, he's still cold over there. Someone give him a flag, please. I love it. I When love we saw the the drums energy. coming in, that was like the icing on the cake. All the players coming in, all the audience members coming in, everyone's just trying to support their teams, but then the drummers, and then the army. Oh, honestly, I'm just blown away. Touching, but we still have the time. Touching on a topic while we're already at the topic, which is Nova, right? These guys, at this point, they must almost feel comfortable winning championships, like it's nothing. Do you think that is an advantage, or do you think they still feel like they have not won a championship at all when they enter this stage? What do you think their mindset is going to be? Because you were talking to Parable earlier. You probably know him to some degree personally as well. Is that something that affects him? They're friends, yeah. They are. Is this bro? It works out somehow, even though I don't speak Chinese. But hey, translate tools are amazing. Anyways, what I was gonna say in regards to Noah is that I do feel like they come in with a chip on their shoulder.